Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaura Simanande Paramahamsa Kri Bhagavata Stotra Sutta Sri Simad His Divine Grace Cheraboy Charanarvin Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Skandagi Foundation His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namasarya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhaktivedanta Ki Rantaraj Bhagavatam Ki Jaini Tagore Pimanandi all glories be assembled devotees, all glories be assembled devotees, all glories be assembled devotees. All glories to Sri Guru to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Gyantimirandasya Gyanandana Salakaya Chakshurandritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahaguna Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paritana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanvitam Sham Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosade Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priya Vansakalpa Tarubhasya Kripa Sindhu Vyayevasa Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Ram Saiva Narotamam Before reciting the Srimad Bhagavatam, by means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and love devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Pranam Brahmasamitam Uttama Charitam Kasya Dhanyam Swasya Namaha. This Srimad Bhagavatam, which is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva,
It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Sadhyaya Namaha Om Sadhyaya Namaha Om Sadhyaya Namaha Karoti Vataram Yat Kripa Tamaham Bande Srivaram Dinataram. Welcome to the Bhagavatam class. Reading from Canto number 1, chapter 2. And today's text is 30. Sa Vedam Sasar Jagre Bhagavan Atma Mayaya Gunamaya Guno Vibhu Sa Evedam Sasa Jagre Chasau Gunamaya Guno Vibhu. Translation and purport by His Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. In the beginning of the material creation, that absolute personality of Godhead Vasudeva, in his transcendental position, created the energies of cause and effect by his own internal energy. Translation. Okay. In the beginning of the material creation, that absolute personality of Godhead Vasudeva, in his transcendental position, created the energies of cause and effect by his own internal energy. Today we have short report or short class. Required for the creation of the material world were also created by him. भगवान के साथ तो हमेशा तीव्र रहेगी क्योंकि जो कॉज और इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कारण और उसका इफेक्ट होता है प्रभाव, ये दोनों जो बनते हैं, ये दोनों से भौतिक संसार बनता है। इन दोनों को बनाने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति भगवान है। He is unaffected, therefore, by the qualities of the material modes. इसको बनाने के बाद उस पर वो लिप्त नहीं हो जाते, और इसलिए तीनों गुणों से भगवान परे होते हैं। His existence, form, activities, and paraphernalia all existed before the material creation. उनका सत्ता, भगवान की सत्ता, भगवान का होना, इस भौतिक जगत के बनने के पहले भी था। And in italics, he is all spiritual and has nothing to do with the qualities of the material world. भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और इस भौतिक सृष्टि जो उन्होंने बनाया है, इस भौतिक सृष्टि से उनको कोई लेना देना। World which are qualitative. वो आध्यात्मिक जगत के जो गुण हैं, इस भौतिक जगत के गुणों से पूर्णतः अलग है। जैसे कभी-कभी भगवान को निर्गुण कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि लेकिन भगवान के अंदर जो गुण है, दया, क्षमा, उनके अंदर जो गुण है, वो है, लेकिन वो फल जो है वो सारे चीजें में
So this verse is underlying the all spiritual transcendental position of the Supreme Personality of Godhead. ये श्लोक भगवान के दिव्य स्थिति को बहुत अच्छे से बेखूबी से बता रहा है And because he is the cause of all causes, including the cause of the material energy, therefore he controls the material energy and not controlled by the material energy. क्योंकि वो भौतिक सृष्टि के कारण है इसलिए वो भौतिक सृष्टि के कंट्रोलर हैं उसको उसके नियामक हैं उसको कंट्रोल The material, if we had created the material energy and were in control of the material energy, we would not be affected by the material energy. अगर किसी को लगता है कि वो भगवान है या वो प्रकृति के वश में रहता है उसको सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो हम प्रकृति के वश में अभी कैसे बैठे होते इतना बीमार पड़ते हैं बुरे होते हैं प्रकृति के वश में हैं The scientists are very proud that they are creating so many things. वैज्ञानिक लोगों को बहुत घमंड है कि बहुत कुछ बना रहे हैं But actually, whatever so-called creation they are making, they are utilizing, stealing, actually, the already created energy of somebody else. ये वैज्ञानिक लोग घमंड कर रहे हैं हम ये बना देंगे वो बना देंगे लेकिन सब चीज बनाने के लिए लोहा लकड़ बालू पानी सब जमीन से बना हुआ जो भगवान बना के रखे उसी को चोरी करके फिर अपना कुछ बना देते हैं Prabhupada gives the example, just like if you hire somebody to make your house, he will make a very nice house or a nice table for you. Then if he claims that, okay, I have created this house, I've created this table, it is mine. आप एक राजमिस्त्री को लेके आए उसको बोले घर बनाओ वो घर बनाया घर बनाने का बोलता है हम रहेंगे क्या क्या घर हम बनाए Such a person would be called a thief if he makes that kind of claim. चोर कहते हैं चोर Yeah. कि वो घर बना के रख लिया आपने So I don't think there's many people sitting in the class here this morning who can claim that they have created any energy of the material world. यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कि आप कह सकते हैं कि आप कुछ बनाए हैं दुनिया में Anyone? Raise your hand. कोई बोला तो आप हाथ उठाओ So therefore, this is it requires a little bit of humility on the part of all of us that we are not the creators of this material world, and therefore we have to follow the dictates or the laws of the material world. Yeah. क्योंकि हम इस संसार को नहीं बनाए हैं इसलिए जो नियम बनाए गए हैं दुनिया के वो हमारे ऊपर लागू होते हैं Yeah, that is actually dharma. Dharma means the laws established by the Supreme Personality of Godhead. इसी को धर्म कहते हैं धर्म का मतलब है जो परम भगवान ने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं उसको पालन करना धर्म Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. In the Bhagavatam, it is Jamaraj who is making this statement that the principles of dharma, religiosity, are not man-made, they are established and created by the Supreme Lord Himself. धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम ये यमराज जी श्लोक कह रहे हैं भागवत में कह रहे हैं कि धर्म जो है वो कोई आदमी नहीं बना सकता है भगवान को बनाना है So therefore, the beginning criteria or the quality, initial quality needed for someone to advance in spiritual life is to recognize our limited and very small, insignificant position. तो हमारे लिए तो अच्छा यही होगा कि हमारा जो छोटा सा अस्तित्व है उसको हम जान जाए कि हमारा इतना ही अस्तित्व है इतना ही ताकत है हमारा So this is the main instruction that is being given here. Krishna also explains in the Bhagavad Gita that this is the beginning qualification for someone to understand about the absolute truth. भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे आप बस में नहीं कर रहे आप बस में हैं तब तक आपको कुछ भी गीता का और तत्व ज्ञान का आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ समझ में नहीं आ रहा Tadvidi pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti jnanam jnaninas tattvadarshinaha. That to understand and to have this tattva darshan,
tattva darshan, to see. To see doesn't mean to see with our material eyes, but to have proper understanding of the absolute truth. These three prerequisites are needed, beginning with pranipat, being humble. किसी चीज को देखने से आपको जो दिखता है वो चीज नहीं रहता। उसको जैसे कि आप कोई भी चीज देख रहे हैं दुनिया में, उसको तो देख रहे हैं, वैसा नहीं है। उसको तत्व से, दर्शन से जब आप देखते हैं, जैसे दर्शन से आप देख के आपको पता चलता है कि दुनिया का अंगूर है, पेड़ है लेकिन आज है कल नहीं रहेगा, ये बस कुछ दिनों के लिए। तो ये जो दर्शन से जब कोई चीज देखते हैं तो असली वो जो चीजें दिखता है। और दर्शन तब हो सकता है जब हम प्रणिपात, जब हम नम्र होके ज्ञान लेना चाहेंगे, तब दर्शन मिलना हमको चालू होगा। Many people would challenge Srila Prabhupada, if you have seen God, show me God. बहुत बार लोग चैलेंज करते थे प्रभुपाद जी को कि अगर आपने भगवान को देखा है तो आप भगवान को जरा दिखा दो सबको। Srila Prabhupada would reply in a number of ways. Actually, very often the same question, Prabhupada had many replies. बहुत सारे इसके रिप्लाई हो गए। So one very nice reply he gave once was that we should not be anxious to see God, but rather we should be anxious that God can see us nicely engaged in His service. ऐसे चुनौतियों का प्रभुपाद जी उत्तर देते थे कई बार अलग अलग रूप से। एक बार इन्होंने कहा भगवान देखने का प्रयास मत कीजिए, भगवान के लिए कुछ ऐसा करिए कि भगवान ही आपको देखे। We can only have darshan of the Lord, we can only see God by His mercy and blessings. When He becomes pleased and satisfied with our behavior, with our activities, with our surrender, then He will reveal Himself accordingly. जब हम भगवान को शरणागत होते हैं और शरणागत होने के बाद भगवान हमको उसी प्रकार से अपने आप को प्रकट करके दिखा देते हैं। So this verse is underlying the difference between us, the living entity, and the Supreme Lord. ये श्लोक भगवान और भक्त के बीच का फर्क दिखाता है। Yeah. Krishna, one of the qualities described by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Dasamulu Tattva is that the Supreme Lord, He is Shaktiman. He is the origin and controller of Shakti, all kinds of different energies. 10 मूल तत्व भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि परम भगवान जो है शक्तिमान है, सारी शक्तियों के स्रोत। And that is the specific quality or position of the Supreme Lord. That is not the position of the created living entity or jiva. ये भगवान की स्थिति शक्तिमान की है, कोई भी कह सकता है कि शक्तिमान। Yeah, living entity is described as amsha, part and parcel, and therefore subordinate. भगवान का अंश ही रहेगा। Yes. Living entity is also described as being Veda Abeda, means in quality the same as the Lord. सच्चिदानंद दोनों है। परिमाणात्मक रूप से भगवान अनंत है और जीवात्मा जो है साइज में बहुत छोटा है। Yes. So the more we understand in this way our position, then we can properly begin the process of surrendering to the Lord. जितना हम इसको समझेंगे उतना ही हम शरणागति के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। Yeah. So, short purport, short comment. छोटा तात्पर्य, छोटा क्लास। Anyone have any question? ये कोई प्रश्न? Yes. Can you explain a little bit about cause and effect? What is cause and effect? कॉज और इफेक्ट जो है कारण और उसका प्रभाव, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की तरह। Every day we have experience of cause and effect. हर दिन हमें इसका अनुभव होता है कॉज और इफेक्ट का। If we get up in the early morning, the effect will be we will attend Mangalarti. अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो मंगल आरती करेंगे, कॉज हुआ, इफेक्ट हुआ। So there is a direct link and connection between of cause and effect is being
linked or connected with the Supreme Lord. He is the original cause of this concept of cause and effect. We are not. भगवान जो है सारे कॉज इफेक्ट के परम आखिरी फाइनल कॉज Yeah. He is described, isn't it? Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam, the cause of all causes. We are not the cause of all causes. भगवान सारे कारणों के कारण है हम नहीं So because he is the cause of all causes, he is not affected by इसलिए भगवान इस दुनिया की कोई चीज से उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दुनिया उन्होंने बनाई yeah. And so this whole concept of cause and effect is intricately connected with the law of karma. Isn't it? Yeah. कॉज और इफेक्ट का जो चीज है वो कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है Living entity takes up a material body, comes under the control of the modes of material nature, and becomes bound up by this law of cause and effect. और शरीर लेते ही जीव जो है कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर में फंस जाता है Yeah. Whereas Krishna, who remains always completely transcendental, although he also comes within the material sphere, the material world, never becomes affected by that material energy. भगवान कृष्ण तो भौतिक जगत में आते हैं लेकिन फिर भी आने के बाद भी इस भौतिक तत्वों से प्रभावित नहीं हो जाते Yeah. So we can say that for the living entity, cause and effect is of a different nature than the cause and effect of the original creator, Krishna. जीव का जो कॉज एंड इफेक्ट है वो अलग है भगवान क्रिएटर है भगवान इस संसार के बनाने वाले हैं उनका उनका और जीव का अलग है Yeah. Would you like to add to that? क्या कोई इसको जोड़ना चाहेगा और जैसे कि कॉज है ना आपके माता पिता से आता है उनका कॉज उनके माता पिता है उनका कॉज उनके माता पिता है फाइनली ब्रह्मा जी है ब्रह्मा जी नारायण से आए नारायण महाविष्णु से आए महाविष्णु जो है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न से आए ये वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण ये बलदेव से आए है ना बलदेव कृष्णा से आए कृष्णा किसी से नहीं cause effect cause effect हमने एक घर बनाया ठीक है अब ये जो मटेरियल है वो पहले जंगल में था है ना वो मेरे लिए कॉज हो गया ये इफेक्ट हो गया लेकिन वो जो पेड़ है जंगल में वो मिट्टी से निकल कर पेड़ बन गया तो मिट्टी उसके लिए कॉज है और पेड़ उसके लिए इफेक्ट है अब मिट्टी जो है कॉज है ना तो जो मिट्टी कॉज है वो कॉज जो है वो भौतिक जो 24 तत्व है उसका वो मिश्रण होकर जो इफेक्ट है वो उसका कॉज हो गया भौतिक जो 24 तत्व है हाँ वो अभी इफेक्ट अभी वो कॉज हो गया अब इसका कॉज हो गया दुर्गा जी हो गई अब दुर्गा जी का जो कॉज है वो विष्णु का क्लांस हो गया उसके बाद फिर फाइनल में कॉज घूमते घूमते कृष्णा बने यहाँ से भी चालू करो तुम्हारे से भी चालू करो फाइनल में तो कृष्णा ही हमारा Any other? Tattva. What is that? That's a big question, which requires more than one class. बहुत बड़ा सवाल है इसको एक से ज़्यादा क्लास लगेगा उत्तर देने में Actually, tattva is like the main subject matter. Tattva means what is the absolute truth, unchanging. So Gandhiji wrote one book entitled
my experiment with the absolute truth. उन्होंने गाने एक किताब लिखा था मेरे तत्व पे मेरे प्रयोग Yeah. My speculation with the absolute truth. मेरी मनगढ़ंत कहानियां सत्य के बारे में So the problem is that we cannot speculate about the absolute truth because it is absolute. मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना सकते Yeah. And that's why those many people who are so-called intellectual and scientists, they reject the idea of absolute truth. More convenient that way. There is no absolute truth, they will say. क्योंकि आज तक वैज्ञानिक लोगों को सच मिला नहीं है इसलिए उन लोगों ने निकाल दिया कि सच कभी मिल भी सकता है Because if there is an absolute truth, means I have to surrender to that absolute जिस truth. दिन वो पता चल जाएगा उस दिन वो शरणागति होना होगा और वो होना नहीं चाहते And our disease is we don't want to surrender. हमारा बीमारी हम तो शरणागत होना से डरते हैं सत्य So, नहीं चाहिए Bhagavad Gita, Krishna specifically speaks to Arjuna to explain to him, and all the Vedic literatures also, to, बदल नहीं सकते वो सत्य है the essence of dharma is to teach us what is that absolute truth. धर्म का वास्तव मूल सिद्धांत है कि वही सिखाओ कि तत्व किसको कहते हैं जो चीज बदले नहीं And that is mentioned, of course, in the Bhagavatam. Vedanti tat tattva vidam tattva yas jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdite. भागवत में यही लिखा है कि वदंती तत्व तत्वविदस् तत्व में ज्ञान अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान इति शब्द है Yeah. तत्व जो है तीन तरह से बताते हैं परमात्मा ब्रह्मन परमात्मा और भगवान Yeah. Only those in human form of life can begin to understand what is tattva. जो आदमी है वही इसको समझने का शुरुआत भी कर सकता है जानवर तो समझने का चालू नहीं कर And unless we understand what is tattva, we cannot come out of this material world. सकता जब तक तत्व नहीं समझ में आएगा भौतिक संसार से निकल नहीं पाएंगे So that verse we were mentioning that Krishna speaks in the Bhagavad Gita, Tattva Darshan. What is that process for Tattva Darshan is given by Krishna. तत्व दर्शन क्या है ये भगवान कृष्ण कह Yeah. And the essence of that Tattva Darshan, or rather to come to that platform of Tattva Darshan, is, we mentioned the first one, is actually to be very submissive, humble, then to be inquisitive and to render service. तत्व दर्शन करने के लिए उसका क्राइटेरिया है उसकी योग्यता है कि आदमी नम्र हो के सेवा करे और फिर सवाल करे तब तत्व जाके खुलेगा देखेंगे That's why we attend Bhagavatam class, ask questions, and then immediately after Bhagavatam class we engage in all kinds of seva, service. इसलिए हम लोग भागवतम क्लास करते हैं और उसके बाद हम लोग तुरंत जाके सेवा में लग जाते हैं प्रसाद उसमें Those who don't attend Bhagavatam class don't get the opportunity to attend, to ask questions, and therefore they miss out on what is seva. जो भागवतम क्लास अटेंड नहीं करते इसलिए उनको प्रश्न पूछने का भी मौका नहीं मिलता इसलिए मौका भी चला जाता है Yeah. Attending Bhagavatam class, hearing from Bhagavatam is also seva, भागवतम सुनना भी सेवा है most important seva. Little bit, yeah. प्रसादम है महाराज प्रसाद Prasadam is a very important seva also, प्रसाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है especially after Ekadasi, विशेष और एकादशी के बाद especially for those who followed strictly Ekadasi by fasting all day. खास करके जो पूरा नहीं करते हैं How many performed Nirjala Ekadasi yesterday? Hare Krishna. So it's time to break fast. Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Sri Prabhupada ki Gaura Primanande Hare Krishna. भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय